Good evening guys, what's up? Double salam आप लोग को इतना प्यार देने के लिए. Anyway, so this is Shubhadeep and you're watching the Cruise Life. So it's been such a long time that I haven't even started my bike and I haven't even watched it यार. Now you may say that कि भाई आपका बाइक है, it's your responsibility to do it. I know यार, I'm really wrong. I'm really sorry for doing that. But you know what happens is that every morning I think of fixing my bike, like washing my bike, chain lubing and each and everything that must be done with the bike. The thing happens is it starts raining heavily and it's been happening for more than a week or so. एक हफ्ता के ऊपर हो गया, पूरा बारिश हो रहा है जब भी मैं सुबह उठता हूँ एंड आई फेल टू डू व्हाट आई एम प्लानिंग टू. एनीवे सो नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं इफ द वेदर रिमेन्स ऑल राइट. आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो आज का टॉपिक जो बनने वाला है, आई एम गोना डिस्कस विद यू गाइज द प्रोसीड्योर्स ऑफ बाइंग अ यूज्ड बाइक और सेकेंड हैंड बाइक. लाइक व्हाट थिंग्स यू शुड फॉलो, व्हाट मेजर्स यू शुड टेक, व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक, व्हाट थिंग्स यू शुड चेक बिफोर बाइंग अ यूज्ड बाइक. ठीक है, सी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बाइकर और प्रोफेशनल मैकेनिक कि मैं आपको सब कुछ इन टू एंड फ्रॉम नट्स टू बोल्ट्स आप लोग को दिखा दूंगा कि ये करने से अच्छा रहेगा, ये करने से अच्छा नहीं रहेगा. आई एम गोना डिस्कस विद यू दोज थिंग्स व्हिच कैन मेक यू लाइक लिटिल बिट एक्सपीरियंस. में मेरा खुद का जो ज्ञान है मैं आप लोग से बोलूँगा कि जिससे आप थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो जाओ, ताकि आप जब बाइक खरीदने जाओ that time you won't suffer, that time you won't feel stumbled upon कि मैं क्या चेक करूँ क्या नहीं चेक करूँ before buying this bike, because I know it's your hard earned money which you are putting it and you don't want to waste it on something which makes you suffer after you buy the bike, right? Obviously you must be little bit prepared and this video is for those guys who want to get a little bit experienced before buying this second hand bike so that they can make a flawless transaction and also don't face any kind of problems in the near future after buying the bike. Anyway, so this is gonna be the topic for today, so let's start the vlog. So there are basically two types of places from where you can buy a bike. ठीक है, first of all आता है कि individual, like you are searching for a bike in online sites like OLX, Quikr, Droom, whatever it might be, who sells second-hand bikes. You contact the person out of the advertisements you see and talk with him and buy the bike, or else there must be a friend of yours or a friend of yours who is willing to sell a bike. You talk with him, and that's an individual. Okay, and secondly comes a dealer, like who deals in a lot of second-hand bikes, that he collects a lot of second-hand bikes and they sell it from their place, like they are the middleman of selling the second-hand bikes. Okay, so ये दोनों में you can buy bikes from any of the two things, but the thing is दोनों में ही flaws है which you must keep in mind. Okay, the thing is buying from a dealer is safe. You know, buying from a dealer is a safe option because he verifies the bike. You know, क्यों होता है, क्योंकि देखो एक डीलर जो होता है वो मिडिल मैन है ऑफ सेलिंग द बाइक. ठीक है, सो व्हेन ही इज़ बाइंग द बाइक फ्रॉम अ पर्सन, लाइक वो एक सेलर से बाई करता है, वो मिडिल मैन बाई करता है डीलर. ठीक है, वो डीलर बाई करने के बाद आप लोग को सेल करेगा. सो इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द बाइक, टू चेक ऑन इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद द बाइक, इफ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ इश्यूज विद द बाइक. वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चेक करके उसको ठीक करना. बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू बाई अ बाइक फ्रॉम डीलर, you won't buy a bad bike or you won't buy a bike जो कोई पार्ट से खराब है. That's why it's the responsibility of the dealers to verify and check each and everything of the bike before he puts that piece in the showroom, right? So it's better to buy from a dealer, but इसमें एक प्रॉब्लम जो है कि sometimes they may charge you more than what the actual price of the bike must be, because you know they are hell experienced. At that time आपका bargaining capability कम जाएगा as compared to buying from an individual, because you know dealers they deal with bikes like every day, that's their profession. Okay, but when you buy from an individual, at that time you know they are same experienced as you are, but the dealer is more experienced than you are. So at that time you may fail and end up buying a bike which is worth 50,000 but you are paying 60,000 or whatever it might be. देखो इंडिविजुअल में क्या होगी, आप बार्गेनिंग कर सकते हो और टोटली डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स कि कितना आप कमा पाओगे. ठीक है, बट यू नो देयर आर सम काइंड ऑफ थिंग्स यू माइट टेक एन नोटिस दैट व्हेन यू आर सीइंग एन एड इन OLX इट मे बी फ्रॉड एंड दैट हैपेंड मेनी टाइम्स. इट हैपेंड. ठीक है, यू गो टू दैट प्लेस एंड दे जस्ट लूट यू एंड टेक ऑल योर मनी एंड गो अवे, रन अवे. सो मेनी थिंग कैन हैपन. तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस
प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ठीक है। सो फिक्स अ प्लेस विच इज अ पब्लिक प्लेस, ठीक है। मे बी यू आर अ सेलर और अ बायर, वॉट एवर यू माइट बी, जस्ट डील इन अ पब्लिक प्लेस बिकॉज दैट प्लेस इज मच सेफर देन एनी isolated place. Now, one more thing is that take someone with you, okay, because it's safer. Obviously it's safer to go with someone than to be alone, ठीक है। And yeah, also don't do transactions during night time because you know रात के अंदर में कुछ भी हो सकता है. This world is really a bad place, you know. Okay, so the next thing is always try to avoid cash transactions. You know, it's always safer to transfer online than to carry this much amount of cash with you while buying the bike, you know, because the bike is not a low cost thingy. Obviously आपको ज़्यादा प्राइस में खरीदना पड़ेगा, so at least whatever you might spend on it, that must be this much big on the bundle. So it's always riskier to carry a bundle with you. Anything can happen, you know. But if you're buying a bike from a known person, like if he's a friend of yours, then you can easily go and buy with cash. It doesn't matter because you know you can rely upon him with the cash. So the next thing is the documents. You know, documents are the most important thing of a transaction, you know, because if you don't have a proof or if your proof is something wrong, then you may be charged of any cases, you know, anything can happen. Okay, so क्या क्या करना है कि आरटीओ का जो चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ को आपको इवन इफ यू आर बाइंग और सेलिंग द बाइक, ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट check it thoroughly by yourself. What to do is tally the names of the documents with the actual identity of the owner, ठीक है। so उससे आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। एंड also check the engine and chassis number, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इंजन नंबर जो होता है, बाइक का इंजन नंबर जो है, उससे टैली करो कि आरसी में जो इंजन नंबर लिखा है वो सही है क्या नहीं। एंड ऑल्सो द चेसी नंबर, सेम थिंग ऑल्सो हैपन्स विद द चेसी नंबर, चेक विद द चेसी नंबर 2, that will make you sure that कि बाइक ठीक है। टेस्ट राइड इज़ अ मस्ट थिंग, यू नो। आप चलाओ, आपके दोस्त को चलाने दो, एक मैकेनिक लेके जाओ इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू नो समवन। उससे क्या होता है कि यू गेट श्योर दैट कि बाइक में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी मैं आप लोग को एक एक करके बोल देता हूँ कि क्या क्या चेक करना पड़ता है, so that you may get finalize that yeah, this is the good bike. Okay, while you are riding the bike, check the balancing, ठीक है। Make sure the balancing is good. Go to a kind of road where the road is even. वहाँ पे जाके चेक करो कि बाइक जब चला रहे हो, it doesn't move towards the right or it doesn't move towards the left, ठीक है। So if something happens with that, then you must think that there is some problem with the balancing or the ergonomics of the bike, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि वॉबलिंग, देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ वॉबल्स। देखो कि बाइक अगर काँप रहा है या नहीं, कोई कारण से अगर बाइक काँप रहा है देन देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जब वो बाइक आप टेस्ट राइड कर रहे हो, एट दैट टाइम डू चेक दैट कि एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लाइक आप पुश कर रहे हो बाइक को, आप एक्सीलरेट कर रहे हो, बट बाइक इज़ नॉट पुशिंग इटसेल्फ, जितना पावर होना चाहिए उस हिसाब से पावर कम हो रहा है। एट दैट टाइम यू विल फील दैट देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ फिशी थिंग्स इन द बाइक, in the bike's engine obviously. Check on all the switches if it's working perfectly fine, like हॉर्न का स्विच हो गया, इंडिकेटर का स्विच हो गया, लाइट का स्विच हो गया, फिर पासिंग लाइट का स्विच हो गया, ये सब फिर आपका इग्निशन का स्विच हो गया, ये सब आप थॉरली चेक करो, बार बार दबा के चेक करो कि इट्स परफॉर्मिंग वेल स्मूथ और नॉट, ठीक है। बार बार करके ऑन ऑफ करके देखो कि हेडलाइट में कोई फॉल्ट आ रहा है कि नहीं। व्हेन यू आर प्रेसिंग द ब्रेक, द रियर लाइट्स आर ऑल्सो आर वेल lit or not, so do check on that. और ऑल्सो इंडिकेटर्स, चारों इंडिकेटर ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, ये सब चेक करो, ये नॉर्मल है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ द इंजन। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि व्हेन द बाइक इज़ आइडल, टर्न इट ऑन, ठीक है। उसको ऑन करके 5 मिनट तक कुछ मत करो, ऐसे रख दो बिकॉज इट टाइम्स टू हीट अप ऑब्वियसली। उसके बाद थॉरली आप सुनो द साउंड ऑफ द इंजन, ठीक है। जस्ट चेक दैट इफ द इंजन इज साउंडिंग परफेक्टली स्टेबल एंड परफेक्टली बैलेंस्ड, ओके। अब अगर बैलेंस्ड है देन यू विल रियली अंडरस्टैंड एंड देयर वोंट बी एनी इरेगुलरिटी इन द साउंड ऑफ द इंजन। चेक द लीकेज इन engine, thoroughly run over your hand all over the engine, ठीक है, just to check if there are any wet parts or any kind of wet things catches in your hand. If there is any wet kind of substance in your hand, that means there is kind of leak in the engine, so you just check out for that. Okay, next thing what you do is rev the bike, ठीक है। जोर से रेव करो, जितना हो सकता है आप रेव करो, रीच द लिमिट ऑफ द आरपीएम मीटर, यू नो। एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड दैट कि इंजन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये आप चेक भी कर सकते हो एट दैट टाइम व्हेन यू आर टेस्ट राइडिंग द बाइक। ट्राई टू शिफ्ट ऑल द गियर्स एंड रीच द एंड ऑफ द आरपीएम लिमिट, ठीक है। उससे पता चलेगा कि बाइक का ट्रू
पावर क्या है, ट्रू मतलब ओपन होने से आपको पता चलेगा कि बाइक सब ठीक है या नहीं, ठीक है। सो व्हेन यू आर रेविंग अप, डू चेक दैट देयर आर ब्लैक स्मोक्स फ्रॉम द इंजन कमिंग आउट और नॉट। ब्लैक स्मोक निकलना मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन ऑफ अ हेल्दी इंजन। इंजन ऑयल ज़्यादा बर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यू मस्ट कीप अ नोट ऑन दैट। सस्पेंशन में आपको क्या चेक करना है कि सामने पीछे का सस्पेंशन सब कुछ ठीक है। हाथ दे के चेक करो कि समथिंग इज लीकिंग और नॉट, बिकॉज you won't want to buy a broken suspension bike, so obviously check on that. Next thing what you have to check is for any dents or scratches on the bike. उसके लिए I recommended that go during the day time, because रात में उतना अच्छी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट सनलाइट में आप चेक कर सकते हो कि इफ द बाइक इज स्क्रैचलेस। ऑब्वियसली सेकेंड हैंड बाइक खरीद रहे हो तो स्क्रैच रहेगा, बट चेक if it's heavily scratched and heavily dents are there on the bike, तो आप आराम से चेक करो। आप पूरा फर्स्ट टू लास्ट आप देखो कि बाइक में कोई स्क्रैचेस है या नहीं। क्या स्क्रैचेस है तो आप ओनर से पूछिए किस व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द स्क्रैच और व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड द डेंट। चेक फॉर द बाइक हैज़ क्रैश्ड और नॉट, ठीक है। उसके लिए आपको बेसिकली क्या क्या चेक करना पड़ता है वो है कि अब बार एंड्स देखो, बार एंड्स में कोई स्क्रैच है या नहीं, या कोई डेंट्स है या नहीं। फिर मिरर एंड्स देखो कोई डेंट्स है या नहीं। फिर आपका गियर लीवर देखो कि गियर लीवर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज एवरी टाइम अ बाइक फॉल्स इट्स more chance of a gear lever to get jammed or gear lever to get like broken down, ठीक है। gear lever के साथ आप foot pegs भी चेक कर सकते हो कि foot pegs ठीक है या नहीं। next thing also the silencer, okay, silencer में भी देख सकते हो कि कोई एक्सीडेंट होने से अगर राइट साइड में गिरेगा तो ऑब्वियसली साइलेंसर के ऊपर गिरेगा, then there must be scratches on the silencer. So if there is something like that, if you see something like that, ask the owner of the history of the bike कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। at that time you will sure कि यू बाई द बाइक और नॉट, ठीक है। नया पेंट जॉब रहेगा बाइक में, एकदम ओरिजिनल पेंट जॉब रहेगा। उसमें क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हो ना डुकाटी, आई डोंट नो इफ इट्स फोकसिंग और नॉट, ये जो आप देख रहे हो ना ये डुकाटी जो लिखा है यहाँ पे, इन ओरिजिनल बाइक जब आप जो ओरिजिनल पेंट जॉब होता है उसमें अगर आप लाइक नाखून से उसको स्टिकर को उठाने का कोशिश करोगे, you won't be able to pick it up. If it's repainted at that time there will be extra stickers on that, वो आप आराम से उठा पाओगे। So you must check on that, ठीक है। Also one more thing is check both the rims check thoroughly कि कोई kind of bends है या नहीं। Then you will understand that the bike has obviously gone through some kind of harsh environment or may have accident, okay। So basically I have explained you some simple procedures through which you can check that your bike is absolutely correct or there is some problem with it, okay। So देखो last thing जो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि buying a bike is not an easy thing। So देखो ये basically कोई 500 रुपया 1000 रुपये का चीज़ नहीं है। You have to spend a lot of money on that and also you have to invest on lot of legal procedures for getting a bike। So you don't want to spend your hard-earned money on something that makes you suffer in the near future। So उसके लिए do follow these procedures and also one more thing, देखो आप बाइक खरीद रहे हो, ठीक है, वो आपका पैशन हो सकता है, वो आपका स्टाइल के लिए हो सकता है, कुछ भी रीज़न है, वो आपका खुद का रीज़न है, बट पकड़ लो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक सेकेंड हैंड ड्यूक 390 खरीदना है। मैं एक सिंपल फंडा आप लोग को बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप इजीली डिफर कर सकते हो कि कौन सा बाइक बेहतर रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड टेस्ट राइड द ओरिजिनल ड्यूक 390 और अ न्यू ड्यूक 390 व्हिच समवन रिसेंटली बॉट, ठीक है, वो आप टेस्ट राइड करो। उसके बाद दोज हु आर विलिंग टू सेल देयर ड्यूक 390s गो एंड टेस्ट राइड ऑल ऑफ देम, जितना भी आपके रीच के अंदर है, 5 हो गया, 6 बंदा हो गया, 7 बंदा हो गया, सबका बाइक जाके आप टेस्ट करो। यू नो पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ बाइंग अ सेकेंड हैंड बाइक, ठीक है। टेस्ट करने के बाद आप अगर 7 बाइक टेस्ट कर लिया ना, एंड इफ़ यू कंपेयर द बाइक विद अ न्यू वन, एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि एक बाइक में क्या प्रॉब्लम है। टू दैट यू विल गेट एक्सपीरियंस दैट विच बाइक इज अ बेटर वन, ठीक है। देन यू डिसाइड दैट इफ आई चूज दिस बाइक आउट ऑफ द 7 बाइक्स विच आई रोड, you will invest your money at the right spot। Okay, so guys, this was it। I hope कि आप लोग को मैं थोड़ा सा भी मतलब knowledgeable कर पाया and make you gain some of the experience of buying a second hand bike। So next time you are going to buy a bike, keep these things in mind which I have told you in the video. If you think this video is basically fruitful to you, is knowledgeable to you, then don't forget to hit the like button out there and also do subscribe to my channel, guys। Anyway, so guys, ending the vlog right here. This is Shubhadeep signing off from the cruise life. Keep watching, ride hard, ride safe।